qualities of a good or an ideal anesthetic agent. Like what properties a good anesthetic agent should have. We will divide these qualities into three different categories, some physiologic properties, then pharmacologic properties, and there will be some general qualities or properties of the agents that we will see. So let's begin with the physiologic qualities first. A good anesthetic agent should be water soluble, because if it is water soluble, we can inject it via intravenous administration. But if it is not water soluble, or it has some other solubility, then that agent can't be administered through IV route. Then we have to use other routes like intramuscular, or some like subcut or intraosseous, some other routes, but not IV. A good anesthetic agent must not disturb body homeostasis. Like if you see, all agents within the body, all anesthetic agents do cause hypovolemia, or you can say hypotension in the body. This is something universal with all anesthetic agents, or they will cause like hypothermia. Hypothermia is not caused by all, but since when you inject anesthetic agent, an animal is in anesthesia and he won't be moving and all body systems are depressed, then animal will surely go into hypothermia. So this is something universal with all anesthetic agents, but it should not be up to that level that it will start to disturb the body homeostasis. So a good anesthetic agent must not disturb the normal body homeostasis, blood homeostasis. A good anesthetic agent should be non-life threatening, mean it should has less adverse reactions, and it should excrete from body easily. It should not have active metabolites within the body that will start to cause multiple adverse reactions, or it should not have allergic reactions like that. So a good anesthetic agent should be non-life threatening. A good anesthetic agent should be stable. What does this being stable means? Like we have different agents, different drugs. For example, if you see, there is a ketamine. The formulation, there are two formulations available for ketamine. Number one is of 5% and number two is of 10%. In Asian countries, you can find only 5% ketamine available, but in US you can find 10% ketamine availability too. But if you see antibiotics, antibiotics are available in 2% preparation, in 5% preparation, in 10% preparation, 20% preparation. You can also find them in 30% preparation, like fluorophenicols come in 30% too. Like in antibiotics, you have large ranges of formulations, but in example of anesthetic agents, you have less ranges, and that is why these agents must be prepared in only those formulations in which they are stable. So ketamine is available only in these two formulations, and not only just related to formulation concentration. The drugs should be easy to store. Like in antibiotics, if you go for the example of oxidil, we all know that is most commonly used antibiotic, and and that is needed to be stored at refrigerator, not at room temperature, especially in summer season. If you have this oxidil and you place it at room temperature in summer, on the very next day its color will be changed. ये वो transparent white color से change होकर orange color की हो जाती है, ठीक है? And when it's get orange color, so it is not being able to use, क्योंकि उसकी stability जो है वो ख़राब हो जाती है, वो दवाई ख़राब हो चुकी होती है. तो ये लाइक स्टेबल ऐसे ड्रग्स जो हैं उनको ऐसा होना चाहिए कि उनकी स्टोरेज वगैरह भी ईजी हो, ठीक है? कोई ये नहीं है कि वो कोई स्पेशल टेम्परेचर डिमांड करती हों, ठीक है, इस तरह से. सो अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी स्टेबल. A good anesthetic agent has less cardiopulmonary reactions, like you should have less cardiac depression, pulmonary or respiratory depression. But here you should also know that it is common with all anesthetic agents that they will surely cause cardiac depressions, hypotension. You are going to have respiratory depressions for sure. That is something related to anesthetic agent. So, but a good anesthetic agent should have less cardiopulmonary reactions. And by this we can understand that if you have a patient that has respiratory or cardiac issues and we have an anesthetic agent that has less cardiopulmonary reaction, so एक ऐसे जानवर में जिसका जो हार्ट या लंग इश्यूज़ के साथ है हम उसको वो ड्रग लगा सकेंगे, क्योंकि उस ड्रग से नो डाउट कार्डियोपल्मोनरी रिएक्शंस आएंगे, बट वो कम होंगे, माइल्ड होंगे, बहुत थोड़े से होंगे, ठीक है? सो दैट कैन बी अ चॉइस ऑफ एनेस्थीसिया इन दोज एनिमल्स सफरिंग फ्रॉम कार्डियोपल्मोनरी डिजीजेस.
Now, not only cardiopulmonary, but we also want no reactions in the brain. So, a good anesthetic agent should have property that it should not be barrier crossing barriers like blood-brain barrier, blood-placental barriers. For example, when we perform C-section surgery, that is a very common surgery, and you inject the dam with some anesthetic agent to perform the C-section. If that anesthetic agent has property to cross this placental barrier, that means that anesthetic agent will go into the fetus and it will affect the fetus. Fetus will also gonna get the anesthesia. So we need a good anesthetic agent should be non-barrier crossing so that our fetus could be saved. We don't want fetus to get anesthesia. The example we have for this barrier crossing is ketamine. What does ketamine do? That when we use it in C-section, it basically crosses the blood placental barrier, it reaches the fetus and it causes effect on the fetus. Although we use ketamine because it is very inexpensive and farmers can afford this agent, but it surely crosses placental barrier and has its own harmful effects on the fetus. And the reference for this point is Lamont Jones, Veterinary Anesthesia by Lamont Jones. I have a chapter printed of it here. And I'm going to read it for you people. Okay, here you can see ketamine crosses the placenta and enters fetal circulation. In a study evaluating neurological reflexes in puppies born with cesarean section, anesthetic induction of the dam with ketamine and midazolam resulted in the most depression of neurological reflexes when compared with other inductible induction drugs. लाइक वो क्या कह रहे हैं कि जब उन्होंने सर्जरी की सी सेक्शन किया एक बिच का विद कैटामीन एंड मिडाजोलैम को उन्होंने साथ एज एन लाइक सपोर्टिंग बैलेंस एनेस्थीसिया बनाने के लिए उन्होंने यूज़ किया, ठीक है. तो इसमें क्या हुआ कि कैटामीन ने प्लेसेंटा को क्रॉस किया, वो फीटल सर्कुलेशन में गई और उसने पपीज़ जो थे न्यू बॉर्न पपीज़ उनमें न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेस लाए, ठीक है. So like a quality of a good anesthetic agent should be that it should not cross these barriers. Next we have is a good anesthetic agent should have a secure injection site, means it should not induce pain or inflammation at the site of injection. Like we have, for example, barbiturates. Barbiturates are, if injected subcutaneously, they will cause sloughing of tissue from there. So you should not administer barbiturates subcutaneously. Similarly, we have barbiturates that are administered if intramuscularly, they will cause muscle damage. So we have to inject them intravenous route. Similarly, we have propofol. Propofol has no effects via any other route other than intravenous. It is IV only. You can only get its effect from IV route. If you will inject via intramuscular or subcut routes, you are not going to have its action or effects. So we need a good anesthetic agent, should have a secure injection site, should not be painful, irritating, and should be used through any route of administration. So next we have is a good anesthetic agent should retain in the body. What does this mean? That we have certain agents like barbiturates. We have some barbiturates that are ultra short acting. Some are ultra short acting. We have other barbiturates too that are long acting or intermediate acting, but there are some that are ultra short acting. So these drugs do not retain in the body for some time, like appropriate time that we need to redose them again and again. So that is something bad. All we need is that a good anesthetic agent should retain in the body. इसी प्रॉपर्टी को हम फार्माकोलॉजिकली भी पढ़ेंगे, तब आपको ये बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगी. So these were physiological qualities or physiologic properties of a good anesthetic agent. Next we have is pharmacologic properties of a good anesthetic agent. Pharmacological properties. Number one is a good anesthetic agent should be broad spectrum in a way that it can be administered to any species. Like you can administer drug to bovine, equine, feline, canine, ovine, caprine, swine, any species they can be administered. For example, we have this one agent called propofol.
If you repeatedly use propofol in the feline family, it has its own negative effects. Like it will cause injuries, oxidative injuries to feline red blood cells. It will cause Hans body formation. It will cause edema, anorexia, and diarrhea in the cats by use of the propofol. So it is like somewhat contraindicated in the cats. We don't prefer propofol in the cats. Similarly, there is xylazine. We have some issues relating xylazine in the cats, that it disturbs the glucose level. It disturbs the glucose metabolism in the cats. That's why we instead of using xylazine, we use diazepam in the cats. Okay, we prefer diazepam, not xylazine. Similarly, we can use ketamine, but not propofol. We avoid propofol use in the cats because I have listed many blood related issues with the cats, like Hans body formation, oxidative injuries to RBCs, and etc. So a good agent must be broad spectrum, that it should be used in multiple species. A good anesthetic agent should have high therapeutic index. What does this mean? Like it means that the amount of drug that is in the body to perform some proper functions, and then it will leave the body. For example, let's suppose we have some drug that and its dose rate is from 5 mg to 25 mg. So it means 5 to 25 is its therapeutic index. It is its safety window. Like अगर आप उसको 5 mg इंजेक्ट कर दें तभी आपके पास इफेक्ट्स आएंगे, 25 mg इंजेक्ट कर दें तभी आपके पास इफेक्ट्स आएंगे विदाउट सेवियर एडवर्स इफेक्ट्स. लेकिन अगर आप 5 mg से कम उसको इस्तेमाल करेंगे तो ये है सब ऑप्टिमल रिस्पॉन्स आपके पास आएगा. ठीक है, आपके पास ना होने के बराबर इफेक्ट्स आएंगे. और अगर आप 25 mg से ज़्यादा लगाएंगे तो आपके पास इफेक्ट्स जो आपने नॉर्मल इफेक्ट्स लेने हैं उनके साथ साथ एडवर्स इफेक्ट्स भी आएंगे. ठीक है, सो यहाँ पे आपके पास टॉक्सिसिटीज आएंगी. ठीक है, इसी तरह आपके पास लेट्स सपोज एक और ड्रग है. ठीक है, और उसकी डोज रेट क्या है, 0.1 से लेके लेट्स सपोज 0.5 तक है. ठीक है, mg. ठीक है, अगर इससे कम देंगे तो अगेन आपके पास कोई इफेक्ट नहीं आएगा, इससे ज़्यादा देंगे तो आपके पास एडवर्स इफेक्ट्स आएंगे. ठीक है, अब थेराप्यूटिक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो व्हाट वी आर सीइंग दैट वी हैव अ लॉन्गर रेंज ओवर हियर. लाइक यू हैव 5 to 25, लाइक यू हैव अ रेंज ऑफ 20 mg. आप उस 20 mg के अंदर ऊंच नीच अगर आपसे थोड़ी बहुत हो भी जाती है, ठीक है, लेट्स सपोज आपने 10 लगानी थी लेकिन आपसे 15 mg लग गया तो भी आप ओवरडोज भी नहीं गए. ठीक है, यू हैव अ लार्ज सेफ्टी मार्जिन, यू हैव अ लार्ज मार्जिन ऑफ डोज रेट्स. ठीक है, यू हैव अ लार्ज थेराप्यूटिक इंडेक्स, आपका सेफ्टी लेवल बड़ा है. ठीक है, तो आपको अभी खतरे में आप नहीं गए. लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपके पास जस्ट 0.5, बल्कि 0.5 ही नहीं 0.4 mg का सेफ्टी मार्जिन है. और अगर लेट्स सपोज आपने 0.3 लगाना था और वो 0.7 लग गया गलती से, तो आप तो 0.7 पे तो ओवरडोज पे जा चुके हैं. ठीक है, यानी आपके पास सेफ्टी गलती करने के चांसेस बहुत कम हैं. यहाँ पे आपके पास गलती करने के चांसेस ज़्यादा हैं कि अगर आपसे थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो आप मसले में नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी डोज रेट की रेंज बहुत बड़ी है. यहाँ पे डोज रेट की रेंज इतनी छोटी सी है कि छोटी सी गलती भी आपको एडवर्स इफेक्ट यानी आपको मसले में लेके जा सकती है, वो आपके जानवर की जान ले सकती है. ठीक है, सो अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट must have high therapeutic index. Next we have is a good anesthetic agent should have non-toxic metabolites. Like sometimes what happens that after metabolization in the liver, the metabolites that are produced are more toxic or more active than the parent drug molecule itself, or sometimes equally toxic or equally you can say active as compared to parent molecule. So इससे क्या होता है कि आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटीज़ आना शुरू हो जाती हैं, जो ड्यूरेशन है एनेस्थीसिया का वो बढ़ जाता है, क्योंकि लाइक योर एनेस्थीसिया वाज सपोज टू बी इंडक्टेड इनटू द बॉडी, परफॉर्म इट्स फंक्शन व्हाटएवर फंक्शन वाज, देन इट वाज सपोज टू बी मेटाबोलाइज्ड इन लिवर एंड एक्सक्रीटेड आफ्टर दैट. यानी कि जब वो मेटाबॉलिज्म लिवर पे हो जाता है उसका, तो उसके बाद से इट वाज नॉट सपोज टू प्रोड्यूस एनी इफेक्ट्स, डिप्रेशन इफेक्ट्स, एनेस्थेटिक इफेक्ट्स, रादर उसके बाद उसके बाद सेक्रीट होना है. लेकिन लेट्स सपोज अगर इसके मेटाबोलाइट्स भी इक्वली एक्टिव हैं तो पहले एनेस्थीसिया भी जो है वो उसको क्या कर रहा था, एनिमल को एनेस्थेटाइज कर रहा था. ठीक है, और उसके बाद उसके मेटाबोलाइट्स ने भी उसको एक्टिव रखा हुआ है, उसको स्टिल लाइक वो मेटाबोलाइट्स एक्टिव है तो उसने उसको जानवर को अभी भी एनेस्थीसिया में रखा हुआ है. ठीक है, तो आपका एनेस्थीसिया जो है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है. ठीक है, तो गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड हैव नॉन टॉक्सिक और नॉन एक्टिव या रिएक्टिव मेटाबोलाइट्स. The next property is a good anesthetic agent should have quick induction and recovery. What does this mean? These basically two are very important properties. What does this mean? Quick induction यानी कि आपने अगर एक एनिमल को एनेस्थीसिया लगाया है, ठीक है, और उसके लाइक ऑलमोस्ट 5 मिनट के अंदर अंदर उसको इंडक्शन यानी एनिमल को बेहोश कर देना चाहिए. ठीक है, उसको एनेस्थीसिया
एनेस्थीटाइज कर देना चाहिए। ये ना हो कि आपने अभी इंजेक्ट किया है, ठीक है, और उसके बाद वो 40 से 50 मिनट ले रहा हो एनिमल को बेहोश करने में, ठीक है। ये इंडक्शन बहुत लेंथी इंडक्शन है, ठीक है, मोस्टली 5-10 मिनट के अंदर एनिमल बेहोश हो जाना चाहिए। सो अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड हैव क्विक इंडक्शन। इसी तरह रिकवरी भी क्विक होनी चाहिए, यानी आपके पास कोई एनेस्थेटिक एजेंट है जो कि आपने कैसी डोज रेट दिया है कि इट वॉज सपोज टू बी 40 मिनट एनेस्थीसिया, तो 40 मिनट के बाद लाइक 10-15 मिनट में, ठीक है, 10-15 मिनट के मार्जिन में एनिमल वापस होश में आ जाना चाहिए। बट अगर वो बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, इन 40 मिनट्स के बाद भी या इस टाइम के बाद भी अगर वो बहुत ज़्यादा 40 मिनट या इतने ज़्यादा मिनट और लेके रिकवरी में ला रहा है, एनिमल को होश में ला रहा है, तो वो एक अच्छा एनेस्थेटिक एजेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसके अगर मैं मिसाल दूँ तो Thiopental. This is an anesthetic agent which takes 6 to 12 hours recovery time, and this is too much. This is too much. ये बहुत लंबा टाइम पीरियड है एक एनेस्थेटिक एजेंट से रिकवर होने का, यानी कि आपका एनिमल जो है वो इतने घंटे लगा देगा इस एजेंट से रिकवर होते होते। तो ये जो है आपने ऐसे एजेंट्स को कम यूज़ करना है। दिस इज़ अ बैड प्रॉपर्टी। और इसकी एक रीज़न जो है वो ये भी हो सकती है कि मेटाबोलाइट्स भी अगर एक्टिव होंगे, एक ऐसे एजेंट की भी रिकवरी जो है वो स्लो होगी। सो यू गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड हैव क्विक इंडक्शन, क्विक रिकवरी. A good anesthetic agent should have quick alteration of stages. Basically, we have, when we study anesthesia, we have stages of anesthesia. There are 4 stages of anesthesia, and you can watch the video on stages of anesthesia to see the detail of these. But when we inject an anesthetic agent, all we want is to achieve this stage 3. We want to achieve the stage 3 quickly. Why? Because stage number 3 is surgical stage. When animal gets into the stage 3, then we perform the incision and start our surgery. In stage 1 and 2, animal is not properly unconscious, so we don't start surgery or our incision in stage 1 or stage 2. हम stage 3 में जब वो जानवर आता है तो हम सर्जरी अपनी स्टार्ट करते हैं और stage 3 के ही अंदर हम सर्जरी ख़त्म भी करते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल जो है वो आप लाइक उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पे आपको ये बात समझ में आ जाएगी। बट यहाँ पे है कि वी वांट क्विक ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेजेस, एंड अगेन ये बात इसी से रिलेटेड है। क्विक ऑल्ट्रेशन ऑफ स्टेजेस होगी कब? तभी होगी ना कि जब आपकी इंडक्शन फास्ट है, यानी 5 मिनट में ही आप जो है 5-10 मिनट में ही आपका एनिमल स्टेज 3 में चला जाए, ठीक है, और उसी को हम कहेंगे कि ये क्विक इंडक्शन है। और एक बात आपने यहाँ पे याद रखनी है कि ये जो बात है ना, ये सिर्फ और सिर्फ लाइक दिस इज़ नॉट ऑलवेज फिक्सेटेड ऑन द एजेंट यू आर यूजिंग। ये इंडक्शन और रिकवरी जो है वो एनिमल स्पीशी पे भी डिपेंड करती है। एनिमल फिजियोलॉजी, एक स्पीशी के अंदर इंडिविजुअल एनिमल की फिजियोलॉजी पर भी डिपेंड करती है। लाइक आई हैव सीन सर्जरी जहाँ पे देयर वाज अ मेल रूस्टर, एक मुर्गा था, ठीक है, जिसको लाइक 0.7 इंडक्शन के लिए कैटामीन लगाया गया था, 0.7 ml, ठीक है, 0.6 to 7 ml, समथिंग लाइक दैट। लाइक उसके बाद ही वॉज सपोज टू गेट एनेस्थेटाइज विद इन 5 to 10 minutes मैक्सिमम, और उसको 0.7 ml ने कोई फ़र्क नहीं दिया। सो वी गेव 0.3 ml मोर, लाइक 1 ml जो है हमने उसको कैटामीन लगाया, और उस 1 ml पे भी उस रूस्टर ने 40 मिनट्स लिए थे सिर्फ बेहोश होने में। एंड द वेरी नेक्स्ट डे वी डिड अनदर सर्जरी ऑन अनदर रूस्टर, और उसको 0.67 ml में ही वो 5 मिनट में एनेस्थीसिया में था। एंड दिस वो 5 मिनट कहाँ, ये 1 ml के साथ 40 मिनट इसने लिए थे एनेस्थीसिया में जाने के लिए। सो दिस इज़ द वेरिएशन। ये वेरिएशन डिपेंड करती है इंडिविजुअल फिजियोलॉजी के ऊपर भी, ये सिर्फ एनेस्थेटिक एजेंट पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। आप जब खुद सर्जरीज वगैरह परफॉर्म करेंगे यू विल सी के ये जो है इन लाइक एनिमल के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है बात। सो गुड एनेस्थेटिक एजेंट मस्ट बी पोटेंट। दैट मीन्स के लो डोज रेट पर भी वो अपना नॉर्मल फंक्शन जो है, जो नॉर्मल इफेक्ट है वो दे, और ये बात सब एनिमल्स में हो। ये ना हो कि जो है इसकी पोटेंसी जो है वो स्पीशी डिपेंडेंट हो, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। स्पीशी डिपेंडेंट का मतलब यह है कि अगर स्मॉल स्पीशी है तो उस पर डोज रेट डिफरेंट लग रही हो, लार्ज है तो उस पर डिफरेंट लग रही हो, नहीं, सब में ये चीज़ होना चाहिए कि कम डोज रेट पे ज़्यादा इफेक्ट दे दे। इसी एग्जांपल इस तरह से ले रहे हैं कि वी हैव एन एनेस्थेटिक एजेंट डायज़ेपाम। डायज़ेपाम जो है कैट्स या डॉग्स में उसकी डोज रेट, अब ये स्मॉल एनिमल्स हैं, ठीक है, उसमें इसकी डोज रेट 0.2 mg/kg IV है, ठीक है। और अगर हम बड़े जानवरों को देख लें, जैसे कैटल है, गोट है, ठीक है, शीप है या काफ है, ठीक है, इन सब में भी इसकी डोज रेट क्या है, 0.2 से 0.5 mg/kg IV, ठीक है। अब इसमें क्या है कि इसका मतलब यह है कि इतनी सी कम डोज रेट 0.2 पर
बड़ा जानवर हो या छोटा जानवर हो, दोनों पे ये सेम इफेक्ट दे रही है। ये स्पीशी डिपेंडेंट नहीं है, ये वेट डिपेंडेंट नहीं है, ये डोज डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। इट विल गिव इट्स इफेक्ट सेम। सो अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी पोटेंट। लेकिन अगर हम बाकी एनेस्थेटिक एजेंट्स को देखें तो उनकी डोज रेट्स डिफर कर जाती हैं, ठीक है, डिफरेंट एनिमल्स में जाके। उस डिफरेंस को जब हम एनेस्थेटिक एजेंट्स पढ़ेंगे तब उनकी डिटेल में जाएंगे, ठीक है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट मस्ट बी नॉन कम्युलेटिव। नाउ व्हाट डज दिस मीन्स नॉन कम्युलेटिव होना? बेसिकली हमारे पास जो एनेस्थेटिक एजेंट्स होते हैं हम उनके लिए दो टर्म्स यूज़ करते हैं। एक हम कहते हैं कि ये या तो कम्युलेटिव हैं या ये नॉन कम्युलेटिव हैं। नॉन जो कम्युलेटिव होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने एक दवाई है, ठीक है, आपने अपनी कैलकुलेशन की और कैलकुलेशन के बाद आपके पास आ गया कि आपने एक एनिमल को 10 ml लगाना है, ठीक है। अब कम्युलेटिव होने का मतलब ये है कि आप जो है इस 10 को डिवाइड कर लें। आप जो है पहले 5 ml लगा दें, फिर आप थोड़े वक्फे के बाद 2 ml लगा दें, फिर थोड़े वक्फे के बाद आप 2 ml लगा दें, फिर थोड़े वक्फे के बाद आप 1 ml लगा दें। इस तरह से डोज को डिवाइड कर देना जो होता है उसको हम कहते हैं कम्युलेटिव होना। इसको हम कहते हैं कम्युलेटिव होना। नॉन कम्युलेटिव का मतलब यह है कि अगर 10 ml आपने कैलकुलेट किया तो 10 की 10 ml आप इकट्ठे लगा दें, ठीक है। तो ये होता है। अब बेसिकली बात ये होती है कि हम कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव की सिलेक्शन करते कैसे हैं। अगर हम 10 ml इकट्ठे लगा देते हैं ना तो उससे ये होगा कि आपके पास लेट्स 40 मिनट की सर्जरी थी 10 ml से, मतलब आपने जो भी एनेस्थेटिक एजेंट लिया है, ठीक है, उसकी जो है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो था वो 40 मिनट का था। आपने 10 ml इकट्ठे लगाया, ठीक है, और जिस वक्त आपने लगाया है उससे 40 मिनट बाद तक आपके जो है डोज रेट पूरी हो चुकी होगी क्योंकि आपने इकट्ठे लगा दिया है, और 40 ml के बाद वो जानवर जो है वो जाग जाएगा, ठीक है। लेकिन कम्युलेटिव में क्या होता है कि आपने 5 ml लगाया, आपके 15 मिनट 5 ml ने कवर कर दिए, आपने 2 ml लगाया, अगले 10 मिनट फिर 5 ml ने कवर कर दिए, फिर आपने 2 मिनट लगाया, आपके अगले 10 मिनट मजीद उसने कवर कर दिए, आपने 1 ml लगाया, उससे भी आपके फर्दर आगे 10 मिनट और हो गए, ठीक है। तो इस तरह क्या होता है कि कम्युलेटिव से एक तो यह है कि आपके पास चांस होते हैं कि लेट्स सपोज आपकी सर्जरी 25 मिनट बाद खत्म हो गई है तो आप वहीं पे रोक दो, आप ये एंड वाला ना लगाओ, ठीक है। आप अपने एनिमल को यहाँ पे जगा सकते हो, ठीक है। अगर आपकी सर्जरी ये कितने मिनट हो गई, ये 45 मिनट हो गए हैं ना, ठीक है, रफली, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि 40 मिनट से ज़्यादा भी अगर आपकी सर्जरी जा रही थी तो अगर आपने टाइम बढ़ाना है तो कम्युलेटिव से आप अपना टाइम बढ़ा सकते हो, ठीक है। लेकिन नॉन कम्युलेटिव से आप ये दो एडवांटेजेस नहीं ले सकते। वो दो एडवांटेजेस क्या है कि एनेस्थीसिया को फर्दर थोड़ा प्रोलॉन्ग कर लेना, और दूसरा ये कि अगर आपकी सर्जरी जल्दी खत्म हो गई है तो अपने एनिमल को जल्दी जगा लेना, ठीक है। तो ये दो एडवांटेजेस होते हैं कम्युलेटिव के ओवर नॉन कम्युलेटिव। बट कम्युलेटिव को क्यों पसंद, नॉन कम्युलेटिव को क्यों पसंद किया जाता है? वाई अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी नॉन कम्युलेटिव। अब बात यह है कि अगर आप एक लाइक हॉस्पिटल में खड़े हैं, क्लिनिक में खड़े हैं, तो आप कम्युलेटिव तरीके से चल सकते हैं। लेकिन अगर आप एक फील्ड में खड़े हैं ना तो फील्ड में कम्युलेटिव एनेस्थीसिया नहीं पसंद किया जाता। आपको फील्ड में अगर आप कोई एनेस्थेटिक एजेंट जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है, ठीक है, और आपको उसको बार बार लगाना पड़ रहा है, ठीक है, इफेक्ट लेने के लिए हर थोड़ी देर बाद आपको ध्यान रखना पड़ता है और आपको इंजेक्शन लगाना पड़ता है, तो फील्ड में ये चीज़ पसंद नहीं की जाती। और एक और बात यह है कि जो कम्युलेटिव एनेस्थीसिया होते हैं ना, हम कम्युलेटिव उसी एनेस्थेटिक एजेंट पे जाएंगे जो कि शॉर्ट एक्टिंग होगा। अगर कोई एनेस्थेटिक एजेंट लॉन्ग एक्टिंग है ना तो हम नॉन कम्युलेटिव से ही काम चला लेते हैं, ठीक है। और कम्युलेटिव में ज़्यादातर हम उन्हीं एनेस्थेटिक एजेंट पे जाते हैं जो शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। और फील्ड में खड़े होकर आपको वो एजेंट सेलेक्ट करना होता है जिसमें आपको डोज बार बार रिपीट ना करनी पड़े, आपको बार बार इस चीज़ के ऊपर ना ध्यान लगाना पड़े, आप सर्जरी कर सकें। ये ना हो कि अच्छा एनिमल जाग गया है, ठीक है, तो अब दे लगाओ एक और इंजेक्शन, ठीक है। तो ये चीज़ फील्ड में आसान नहीं की जाती है। सो अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी नॉन कम्युलेटिव। नेक्स्ट वी हैव इज अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी बैलेंस्ड और शुड प्रोड्यूस बैलेंस एनेस्थीसिया, यानी उसके अंदर आपके पास सारी प्रॉपर्टीज़ आएँ। और इसके लिए हम करते क्या हैं, हम ये करते हैं कि हम 3 से 4 एनेस्थेटिक एजेंट्स को मिक्स कर लेते हैं। जो मोस्ट कॉमन कॉम्बिनेशन क्लिनिक से यूज़ होता है या फील्ड में यूज़ होता है वो है एट्रोपिन प्लस कैटामीन प्लस ज़ाइलाज़ीन। ज़ाइलाज़ीन जो है वो आपको एनाल्जेसिया दे देगा, ज़ाइलाज़ीन आपको मसल रिलैक्सेशन दे देगा, ठीक है। जो कैटामीन है वो आपको मेन जो एनेस्थीसिया है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और साथ ये मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है जो कि एक अनडिज़ायरेबल सी चीज़ है, और इसी चीज़ के बजाय हमें रिलैक्सेशन चाहिए होती है। इसी के कॉन्ट्रा हम जो है वो हम ज़ाइलाज़ीन लगाते हैं ताकि हमें ये मिले, ठीक है। और एट्रोपिन जो है वो एंटी सियालागॉग है, यानी वो सैलिवेशन को जो है वो डिक्रीज़ करती है, क्योंकि जब ये एनेस्थेटिक एजेंट लगेंगे तो आपके पास जो है हाइपर सैलिवेशन हो गया एनिमल के अंदर, और वो सलाइवा जो है वो उसके सांस की नाली में जा सकता है, ठीक है। सो दैट इज़ हाउ आप जो है अपने सारी जो इफेक्ट्स आपको चाहिए होते हैं कंपोनेंट्स, वो आप एक 3 से 4 एजेंट्स को इस्तेमाल करके आप अपना बैलेंस्ड एनेस्थीसिया लेते हो, ठीक है। सो अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी बैलेंस्ड और गुड एनेस्थीसिया मस्ट बी बैलेंस्ड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी वी हैव इज
A good anesthetic agent must be non-allergic and non-pyogenic. ये मतलब यह है कि आपके पास वो एजेंट लगाने से एनिमल्स में एलर्जिक रिएक्शन ना हो आए. इंडिविजुअल वेरिएशंस हो सकती हैं, बट ये ना हो कि कोई एक एस्थेटिक एजेंट एक पूरी स्पीशी के अंदर हमेशा ही एलर्जिक रिस्पॉन्सेज देता हो. ठीक है, सो इट शुड बी नॉन एलर्जिक एंड नॉन पायोजेनिक, मतलब इट शुड नॉट अफेक्ट द टेम्परेचर ऑफ द body. And that is what we have read in physiologic properties, that good anesthetic agent should not affect the homeostatic properties, body homeostasis of the animal. So these were pharmacologic properties. Next we have general properties. Number one, a good anesthetic agent should be inexpensive. For example, you can get a small vial of diazepam in 40 rupees, but propofol is more than 600 rupees. Like आप अपने एरिया वाइज प्राइस चेक कर सकते हैं. बट द थिंग इज़ कि इस तरह से होता है कि इनएक्सपेंसिव होने की वजह यह है कि आपके फार्मर की रीच नहीं हो. मोस्टली फार्मर्स आर लाइक नॉट रिच पीपल, सो गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड बी इनएक्सपेंसिव. A good anesthetic agent should be non-explosive, non-inflammable. Inflammable का मतलब यह है कि जब आपके पास एक चीज़ पड़ी हुई है और उसके पास आप आग लाएंगे तो उसको आग पकड़ेगी. एक्सप्लोसिव का ये होता है कि एक चीज़ है उसके पास आप आग बेशक ना लेके आए, आग का सोर्स बेशक ना लेके आए, लेकिन अगर गर्मी बढ़ेगी रूम में या इन्वायरमेंट में तो वो खुद ब खुद फट जाएगी. ठीक है, तो लाइक यू हैव योर हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स जहाँ पर लार्ज स्टोर होता है एनेस्थेटिक एजेंट्स का. सो दीज एजेंट शुड बी नॉन एक्सप्लोसिव, नॉन इन्फ्लेमेबल. कि कोई ऐसी एक्सीडेंटल फायर वाली जो है हमें एक्सीडेंट जो है वो ना मिले. ठीक है, सो a good agent must be non-explosive, non-inflammable. And the last property is, well, good anesthetic agent should not require special equipments. For example, we have gaseous anesthesia. In gaseous anesthesia, you need proper like machine that will mix that will first convert the liquid form of that anesthetic agent into vapors, and then those vapor will get mixed with oxygen and then administered through an inhalant cuff, जो कि ऑक्सीजन मास्क मुंह पे लगाया जाता है, उसके थ्रू वो एनिमल को लगाया जाएगा. सो यू नीड अ प्रॉपर बिग सिस्टम फॉर इंजेक्टिंग और फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द गैसियस एनेस्थीसिया. बट जो हम इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एजेंट्स लगाते हैं उनमें हमारे पास जो रिक्वायरमेंट होती है वो सिर्फ एक सिरिंज की होती है, नथिंग एल्स. ठीक है, तो अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड नॉट रिक्वायर स्पेशल इक्विपमेंट. बाकी यह है कि एक चीज़ फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने छोड़ दी है, वो ये है कि अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड हैव इट्स एंटीडोट अवेलेबल. अगर ये बात अपने याद रखनी है कि इन आवर कंट्री पाकिस्तान एंटीडोट्स अवेलेबल नहीं हैं. जैसे कि ज़ाइलाज़ीन का एंटीडोट है जो हिमबाइन. ठीक है, इसी तरह ज़ाइलाज़ीन के साथ जो डेटोमेडीन, मीडेटोमेडीन है उनके एंटीडोट हैं, एट्रोपिमाज़ोल. लेकिन ये सारे एजेंट जो हैं ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं. लेकिन यह है कि इफ़ यू शुड हैव द एंटीडोट फॉर दैट, एंड दैट मेक्स एनेस्थेटिक एजेंट गुड, बिकॉज अगर आप इसके से गलती से ज़्यादा डोज लग गई है तो आप उसके एंटीडोट लगा के उसको रिवर्स कर सकते हैं. और इसकी लास्ट जो फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है वो यह है कि इट शुड हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ. लॉन्ग शेल्फ लाइफ का मतलब ये है कि अगर हम देखें प्रोपोफोल को, तो प्रोपोफोल की वाइल जिस वक्त ओपन हो जाएगी तो उस ओपन करने के बाद वी हैव जस्ट 6 आवर्स टाइम पीरियड जिसमें आपने प्रोपोफोल जितना यूज़ करना है कर लें. अगर उस वाइल के अंदर प्रोपोफोल थोड़ा बहुत बच गया और 6 घंटे हो गए हैं, उसके बाद आपने लाजमी उसको डिस्कार्ड करना है. 6 घंटे के बाद आपने उसको यूज़ नहीं करना, क्योंकि प्रोपोफोल के अंदर जो है कुछ ऐसे एजेंट होते हैं जिसकी वजह से इसकी बैक्टीरियल कंटामिनेशंस हो जाती हैं और फिर वो आप प्रोपोफोल यूज़ करने के काबिल नहीं रहता है. वो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप एनिमल के अंदर खुद बैक्टीरिया इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इसकी वजह से ऐसी सर्जरी के बाद आपके पास बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो बहुत सारे इश्यूज आएंगे. सो गुड एनेस्थेटिक एजेंट शुड हैव लॉन्ग शेल्फ लाइफ. बट ओवरऑल बात यह है कि द रियलिटी इज़ देयर इज़ नो आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट. आपके पास कोई भी आइडियल एनेस्थेटिक एजेंट नहीं अवेलेबल कि जिसमें ये सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हमने फिजियोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं वो हमें मिल जाए. नो, सो दैट वाज ऑल अबाउट द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एनेस्थेटिक एजेंट.